गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग थोड़ा आज बेसिक उसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, और व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टुडेज लाइफ, how you can solve the equations with differential equation mode. So many things are there, so many applications are there for this differential equation, or in fact you can say all the system related to the differential equation. Okay, so आज हम अभी डिस्कस करेंगे differential equation. So differential equation. So ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि वैसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? नाउ विल कम टू नो व्हाट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है ना? जैसे हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर टू एनी ऑफ द वेरिएबल, सो दैट इज कंसिडर्ड एज योर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लाइक I have a function y is equals to f of x, and now I'm going to differentiate this with respect to x. So this is dy over dx, and this is the first derivative of this function. So this part is called your differential coefficient. Or sometimes in some book also someone is writing like this, dy over dx. So this is also considered as your differential coefficient. That means we can take any of the variable, either y or x, it depends on the question. So another one, if you go for the double order, that means second order derivative, so this is again differential coefficient. If you go for the third order, d cube y over dx cube, again it is a differential equation. Suppose you are going to change the variable, so d square y over dx into dy, this is again a differential coefficient. So these are the terms related to the differentiation. That means an equation which involves differential coefficient is called differential equation. For example, if I am writing d cube y over dx cube plus 5 dy over dx plus 2 is equals to 0. So this is a differential equation. Now, because it involves d cube over y dx cube, that is a differential coefficient. Here also we have dy over dx, again it is a differential coefficient. So this equation is treated as your differential equation, correct? Now after that, going to this one more example, you can say, suppose I am writing d square y dx square plus twice of sin y is equals to 0. So this is again differential equation because it also involves a differential coefficient over here. Okay, so this is again differential equation. Now after that we'll go to find its order and derivative. What is the order and what is the degree? That is two terms related to the differential equation. One is called your order and second is degree. So these two terms are related to the differential equation. First is called order, another is called degree. So first we'll discuss what is order. So order of differential equation, यानी order उस differential equation का क्या है? तो जो highest order derivative उस equation में present है उसे हम बोलेंगे उसका order, है ना? That is the highest
derivative term present in differential equation is known as its order, है ना? मीन्स जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एंड प्लस ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म डेरिवेटिव का है वो क्या है? triple derivative, you can say, that is d cube y over dx cube. This is the second order and this is simple y. So this one is called, you can say, the order of this differential equation is 3. So order is differential equation का क्या हो जाएगा? 3, है ना? क्योंकि इसमें highest order derivative term कौन सा है? d cube y over dx cube, right? Okay, suppose I am writing another example like d square y dx square plus y is equals to 4. Suppose this is another differential equation. So in this case, we have a highest order derivative term is second order. So therefore, order of this differential equation is 2. Because here we have two order differentiation. That means second order derivative present is here present. So order of this differential equation is 2. Now suppose we have just one dy over dx minus 5y is equals to 0. So here we have just first derivative present. So that's why the order of this equation is 1. So order of this equation you can say is 1 because the highest order derivative present is first order. So that's why the order is 1. Clear? Okay. Now go to the its degree term, right? How you will define the degree? So degree of this differential equation degree. So degree कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है? तो हमें देखना है कि जो हमारा ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि उसका पावर क्या है, ठीक है? उसका पावर डिग्री कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट है, दैट एक्सपोनेंट इज ट्रीटेड एज योर डिग्री। दैट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivative term present in differential equation is called your degree. Is called degree. Means जो ऑर्डर प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका एक्सपोनेंट क्या है? जो उसका एक्सपोनेंट है दैट इज कंसिडर्ड एज इट्स डिग्री। इट मीन्स अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सपोज मैंने इसका पावर यहाँ पे 2 कर दिया और ये इसका एक्सपोनेंट है 1, तो इसका ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर इज 3 बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड है। एंड अब इसकी जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इट्स नॉट लाइक कि ये एक्सपोनेंट ज्यादा है तो हम इसकी डिग्री 2 पुट अप करें। नो, व्हाट वी हैव टू सी, we have to check the highest order derivative term, and this is the highest order derivative term, and here the exponent is 1, so the degree of this equation is 1. So order of this differential equation is 3 and degree is 1. Okay, now next we will go for this d cube y over dx cube, and suppose we have 2 plus twice of dy over dx and then power 3 plus 5y is equals to 0. So this is the another differential equation. Here order of this differential is 3 because the highest order derivative present is 3, and degree again we have to go for its what? The highest order derivative term, and then we have to look at its exponent. Exponent is 2 here, so that's why the degree is 2. So here you can say the order of this differential equation is 3 and the degree is 2. Clear? Okay.
I think all of you understand this concept, what is order and what is degree. So these two are the basic terms related to the differential equation, where it plays a very important role while solving the question and while finding the solution of differential equation. One more and very important thing now we are going to discuss, that is where the degree is not defined. In some question or in some differential equation, order is there, order is defined, but degree is not defined. So some cases are there where the degree is not defined. Just like first, if the highest or if any of the differential coefficient, is present in angular position of differential equation, then degree is not defined. That is, if any differential coefficient present in angular part of differential equation, then degree is not defined. For example, suppose d square by dx square plus sine of dy over dx plus 4 is equals to 0. So here in this differential equation, order is there, that means highest order derivative is present, but this coefficient dy over dx ये जो है वो एंगुलर पार्ट में, यानी कि साइन के साथ ये एंगुलर पोजीशन में, तो यहाँ पे ये डिग्री डिफाइन नहीं होगा. तो यहाँ पे हम ऑर्डर राइट करेंगे, दैट इज 2, एंड डिग्री विल राइट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वन ऑफ द. अनदर इज कि if the exponent of differential coefficient is either rational or negative, then also degree is not defined. Means अगर हमारा कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट है, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ दैट, इफ इट इज ईदर रैशनल और यू कैन से नेगेटिव, देन आल्सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जांपल d cube by dx cube plus twice of d square by dx square का होल पावर -2 and plus 3 dy over dx plus 4 is equals to 0. Or you can say 4y. So in this case, one of the differential coefficient, that is d square by dx square, and the exponent of that is given as negative. So in this case, degree is not defined. So order here is 3, and degree again is not defined. So if any of the differential coefficient having an exponent of either rational number or negative, तो in that case जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगा. तो हमें दो बातों को बहुत पर्टिकुलर वे में समझना है कि डिग्री डिफाइन कब है. तो डिग्री डिफाइन कब है? जब डिग्री जो है वो किसी भी एंगुलर टर्म में नहीं है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कोई भी एक्सपोनेंट उसका नेगेटिव या रैशनल नहीं है. ओके, सो क्लास इट इज, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. बट अभी मैंने जो आपको समझाया समझ में आया शायद.